जस्टिस सूर्यकांत ने ईडी को एंड डिस्कशन बना दिया। ये वही कोर्ट है जहां से कभी सीबीआई को फ्री हैंड की बात होती थी। अब वही कोर्ट कह रहा है, पहले सीमाएं तय करो फिर सवाल करो। यानी कानून की लाठी अब दोनों तरफ बराबर चलेगी। दोस्तों, मजा तो तब आता है जब खेल शुरू होने से पहले ही गेंदबाज विकेट उड़ा दे, और वैसा ही कुछ किया है जस्टिस सूर्यकांत ने। हां, वही सूर्यकांत जो अभी तक देश के अगले चीफ जस्टिस बने भी नहीं, लेकिन शपथ लेने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट से ऐसा फैसला सुना दिया कि ईडी और सीबीआई के दफ्तरों में ब्रेकिंग न्यूज मोड चालू हो गया। यानी हमारी पूछताछ का क्या होगा वाले सुर चारों तरफ गूंज रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि वकीलों से पूछताछ के दौरान भी कुछ सीमाएं होंगी। अब बताइए, जिन एजेंसियों को लगता था कि उनके पास सवालों की लाठी है, उन्हें अब संविधान का आईना दिखा दिया गया है। अरे भाई सोचिए, ये वही ईडी और सीबीआई हैं जो अब तक नेताओं से लेकर कारोबारियों तक सबको अपने दफ्तर में बुलाकर ऐसे घूरती थी जैसे वो कोई जनहित याचिका नहीं बल्कि जनहित यात्रा पर निकली हो। और अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, वकील भी आम नागरिक नहीं है, उनके कुछ अधिकार है, कुछ पेशेवर सीमाएं हैं। अब एजेंसियों के लिए ये बात सत्याग्रह जैसी लग रही है, क्योंकि जब वकील ही कहेगा मेरा क्लाइंट प्रिविलेज है, मैं ये नहीं बता सकता, तो पूछताछ का पूरा ड्रामा ही ठप। जस्टिस सूर्यकांत ने अपने नाम के मुताबिक ऐसा प्रकाश फैलाया कि एजेंसियों की डार्क मोड में चल रही फाइलें भी चमक गईं। ये फैसला जैसे ही आया, कानूनी गलियारों में एक ही चर्चा, सूर्यकांत का युग शुरू हो गया क्या? यानी आदमी ने शपथ भी नहीं ली और कानून के गलियारों में खलबली मचा दी। अब ये तो वही बात हो गई जैसे कोई नेता चुनाव से पहले ही जीत का भाषण लिखवा ले। सुनिए, मजा यही खत्म नहीं हुआ। ईडी और सीबीआई के दफ्तरों में अब कॉन्फ्रेंस कॉल्स चल रही हैं। सर, अब वकीलों को बुलाना हो तो क्या लीगल नोटिस भी उनसे वकील बनवाएं? किसी ने कहा, अब पूछताछ से पहले हमें खुद लीगल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वकील और क्लाइंट की बातचीत को पवित्र माना जाएगा और बिना जरूरी कारण उस पर जांच एजेंसियां दखल नहीं दे सकती। अब सोचिए, इतने सालों से जो गुप्त फाइलें अब खुलती थीं, अब वो खुद सीलबंद हो गईं। इस फैसले के बाद से सोशल मीडिया पर भी तूफान है। एक यूजर ने लिखा, अब तो ईडी के अधिकारी भी कहेंगे हमसे पूछताछ नहीं हो पाएगी। किसी ने तो मजाक में लिखा, जस्टिस सूर्यकांत ने ईडी को एंड डिस्कशन बना दिया। ये वही कोर्ट है जहां से कभी सीबीआई को फ्री हैंड की बात होती थी। अब वही कोर्ट कह रहा है, पहले सीमाएं तय करो फिर सवाल करो। यानी कानून की लाठी अब दोनों तरफ बराबर चलेगी। देखिए, व्यंग्य तो यह भी है कि यह फैसला उस वक्त आया जब जस्टिस सूर्यकांत को लेकर पहले से चर्चा थी कि वो अगले मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। लोग कह रहे हैं अगर ये शुरुआत है तो आगे क्या होगा। और सच में यह फैसला संकेत है कि उनका कार्यकाल आराम से चलो वाला नहीं होगा। वो आएंगे तो धारा 370 की तरह नहीं, आर्टिकल ऑफ सरप्राइज की तरह आएंगे। अब जरा सोचिए, वकीलों के लिए यह फैसला किसी त्योहार से कम नहीं। सालों से कहा जा रहा था कि जांच एजेंसियां अपनी पूछताछ में पेशेवर सीमाएं लांघती है, और अब कोर्ट ने जैसे कह दिया, बस बहुत हो गया, अब संविधान बोलेगा। लेकिन एजेंसियों के लिए यह जैसे परीक्षा के दिन अचानक सिलेबस बदल जाना हो गया। अब तक जो सवाल पूछते थे, अब खुद जवाब ढूंढ रहे हैं। क्या यह पूछना ठीक है या अदालत में पिट जाऊंगा? राजनीतिक गलियारों में भी खुसर पुसर चालू है। विपक्ष कह रहा है, देखा यही तो कहते थे हम, ईडी सीबीआई राजनीतिक औजार है। वहीं सत्ता पक्ष अब कानूनी सम्मान की बात कर रहा है। यानी जो एजेंसियां अब तक विपक्ष को क्लास लगाती थीं, अब खुद रीटेस्ट दे रही हैं। एक मंत्री ने तो ऑफ रिकॉर्ड कहा, अब हमें भी वकील रखने पड़ेंगे, और वो भी ऐसे जो वकीलों के हक समझे। जस्टिस सूर्यकांत का अंदाज वैसे भी थोड़ा हटके है। न भाषण लंबे न शब्द मीठे, सीधे मुद्दे पर चोट। और यही वजह है कि उनका नाम सुनते ही सिस्टम थोड़ा टेंशन मोड में आ जाता है। जो लोग समझते थे कि सुप्रीम कोर्ट अब बस औपचारिक फैसले दे रहा है, उन्हें यह फैसला याद दिलाएगा कि न्यायपालिका अगर चाहे तो सिस्टम की रीढ़ सीधी कर सकती है। तो दोस्तों, अभी तो ये
ट्रेलर है, असली न्यायिक पिक्चर तो तब शुरू होगी जब जस्टिस सूर्यकांत औपचारिक रूप से चीफ जस्टिस की कुर्सी संभालेंगे। अगर शपथ लेने से पहले ही उन्होंने ईडी और सीबीआई के आंटे निकाल दिए तो सोचिए आगे क्या क्या होगा। शायद अब आने वाले दिनों में कानून का डर नहीं बल्कि कानून की समझ दिखे और हम सब कहें सूर्यकांत जी शपथ से पहले ही कोर्ट में सवेरा कर दिया। Mr. Rakesh Khanna, Senior Advocate, President of the Supreme Court Bar Association. Respected Meenakshi ji, Senior Advocate. Shri Sharma, Senior Advocate, Vice President of the Bar Association. Other office bearers of the Supreme Court Bar Association, Senior Advocates and members of the Bar. I am thankful to the Supreme Court Bar Association for giving this opportunity to exchange the ideas on a subject which is very close to our hearts. Whether the lawyers or judges, we all are concerned about the access to justice. What was begun with by Shri Khanna, Meenakshi ji concluded with a very deep insight of the constitution and judgment of this court, explaining the very concept of access to justice, what are its ingredients, and what is required to be done to achieve this loud goal. The question of wanted infrastructure, the question of requisite strength of the judges to meet with the judge litigation ratio, the question of geographical distance, which has become a stronger factor to dissuade the litigant to come and approach the judicial forms, and several other issues which have been really identified as the barriers for the access to justice have been very well explained by Meenakshi ji. Therefore, I need not to repeat all those issues. As you know it, the Roman saying that whenever there is a wrong, there has to be a remedy is the foundation basis when the concept of access to justice started developing. 1948 Human Rights, International Human Rights Declaration, and eventually followed by our own constitution through Article 39A. Several legislations, Legal Service Authorities Act, Constitution of Nalsa, State Legal Service Authorities, and going up to taluka level, appointments of, very briefly I am pointing out, even the paralegal volunteers and what not and what else. All these efforts have been made to achieve this goal of access to justice. I had a special privilege to work for 2 consecutive terms as a member of the Managing Committee of NALSA from 2007 to 2011, and you will find that most of the schemes formulated by NALSA are notified in 2010. I did contribute in formation of those schemes, but I am not on that academic concept of the access to justice. The last point which Meenakshi ji raised before you, the most pertinent point, that where and how are we going wrong in translating this concept into reality.
Where are we lacking in practical terms? That the concept of access to justice is still being discussed in workshops, seminars, lectures, in auditoriums. Why it has not reached to the general masses? And what are those actual barriers and how to deal with that? She very aptly pointed out and made a appeal to all of you that the lawyers need to come out, pro bono services, even young lawyers who can be funded from different sources, and they can provide a kind of paid but free legal aid to the set of litigants who, because of the economic constraints, are unable to approach the legal forms. There is no doubt about it that free legal aid, accessible justice system, and equality in terms of no difference between poor or rich, workman or industrialist, employer or employee, all these are fundamental to the concept of access to justice. But then my personal viewpoint is that we are lacking in commitment. And unless you are committed to a cause, regardless of the best of the infrastructure which is made available, regardless of all other requirements are taken care, funds provided, you may not be able to achieve the desired result. On illustrative basis, I will just give you one example. I have been also the executive chairman of the State Legal Service Authority, and it was not that Legal Service Authority alone as an exception. I am talking all India basis, pan India. There are more than adequate funds being provided by the central government to legal service authorities for the purpose of engaging good quality advocates, pay them a reasonable amount of fee, where only NALSA has prescribed the minimum one, and ensure that the trust and faith of the litigant who is not in a position to afford legal services of the private lawyer, that is restored and built up, and they are also attracted to engage the legal services, legal aid, the advocate of their choice through the platform of legal services. And practically and factually what's happening is that many legal service authorities are unable to utilize the fund, and there is an annual return. The amount is returned to the state governments or the central government or the other agencies from where it comes, all government agencies only. My personal very strong view is that the concept of access to justice, legal aid, legal services cannot be implemented mechanically through rule books or through prescription. It has to be imbibed in the mindset, and there has to be a commitment by individuals forming a group and then take it and lead it as a movement. Access to justice actually is a very innovative idea. Where, how, in what circumstances, and what type of access to justice you need has to be invented and seen and implemented, translated then and there. There are situations where as an advocate, as a counsel for the party, or as a judge, if you start perceiving yourself to be bound down by the rule book,
And if you continue to involve yourself in the adjudicatory process, keeping in view in mind the litigant who is before you, or the brief or the file which is before a judge, mind you, it may lead to gross violation of access to justice, may not be to that litigant, but to thousands or hundreds or so many other individuals. That's why in one of the conference of Commonwealth Judicial Education platforms, I raised an issue. Fortunately, all big stakeholders from different Commonwealth jurisdictions were present. Indian judges were also there. Justice Madan Lokur, as a sitting judge of the Supreme Court, was there. Professor Madhav Menon was alive and he was there. I raised an issue that have we ever thought of protecting the right of an invisible litigant? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।